सर देखा नहीं था उस वक्त, असल में गलती हो गई थी। मुझसे गलती बहुत बार बार होती है, इस बार से कोशिश करें अवॉइड। ओके सर। Now, gentlemen, in front of you on the screen, is the screen visible to everybody? Hello? यस सर। Okay. यस सर। Now, starting this matrix algebra topic, initially I'm giving the definition of the matrix. A matrix is a rectangular array of elements. Array means it's an arrangement. We arrange some elements in rows and the columns. I mean, haphazardly, we do not write. There should be some rows and some columns. And then we enclose all these elements in a pair of brackets. And they are observed under certain rules. I'm giving you the complete definition. A matrix is a rectangular array of elements enclosed between a pair of brackets under certain rules. I have written certain examples, and the uppercase of English alphabets are used to denote a matrix. Means you'll be writing capital A or capital B or capital C to denote a matrix. I have given you different examples in front of you. This first matrix is having 2 rows and 3 columns. Second, 2 rows, 2 columns. Third is having 3 rows and 2 columns. Row you will count horizontally and column you count vertically. You know it very well. Now is a generalized form of a matrix. A matrix containing elements A, I, J has the general form. Now look here, the general form is in front of you. I told you every element in matrix or determinant is normally recognized by its position. Now if an element is A and it is in the first row and first column position, so we in the subscript, right subscript हम लिख देते हैं छोटा सा 1 1, means this is an element which is lying in the first row and the first column. A12 means element in the first row and the second column, and dot dot so many elements in between. And my last element in this case is A1n, means this is in the first row and the column number is n. Means this is the nth column. So total are n columns. You see, dot dot, you can't assume how many are the values in between. But last value is telling that these are the n columns. Now I'm writing the second row. So first element will be 2 1. 2 1 means this element is in the second row and at the first column. A22 means element at the second row and the second column. A2n means element in the second row and the nth column. If we have so many rows and I assume there are m rows, my first element in the mth row will be AM1, means an element in the mth row and the first column. AM2 means element in the mth row and the second column. And last is AMN, means element is in the mth row and nth column. I'm writing here in the bracket as Mn, M cross N. This indicates the dimension or the order of the matrix. ये भी मैं नीचे explain करने चला हूँ. तो dimension कैसे लिखते हैं? You count the number of rows and write first place पे, और फिर count the number of columns and write it at the second place. And in between should be a multiplication symbol. But do not multiply these two. Let them be visible separately, because just looking at the first placed element, you will come to know about the number of rows of a matrix. And the second placed element, this indicates the number of columns of the matrix. So this matrix is having m rows and n columns. Dimension or order of a matrix. If a matrix has m rows
and n columns, just like we have written here. It is said to have dimension m cross n. For example, the dimension of the matrix A is this. This matrix A, this is having how many rows? There are 3 rows. So at the first place, you will be writing 3, put a cross, and how many columns? There are 4 columns, 3 cross 4. And you write it in an ordered pair bracket. Bracket को लगा दें, छोटी वाली जिसको आप कहते हैं parenthesis. So 3 by 4. This is a matrix of order 3 by 4. और इसको dimension भी कह सकते हैं. Now I give you certain definitions. Special type of matrices. Row vector. है तो ये matrix, but if a matrix is having only one row, तो हम इसको vector भी कहते हैं. Similarly, if a matrix is having only one column, we can also call it a column vector here. Yes. A row vector is a matrix having only one row. For example, in front of you is R, 3, -8, 5, 4, 9. So how many rows? Only one row. The dimension is 1. But columns are 1, 2, 3, 4, 5. So 1 by 5. Order of this matrix is 1 by 5. If rows are only 1, this is called a row vector. Similarly, column vector. Column vector is a matrix having only one column. Like this, C equal to 2, -3, 6. The dimension is 3. There are 3 rows, 1, 2, and 3. Rows you will count horizontally, and column you will count vertically. 3 by 1. Because column is only 1, so this is called as column vector. Square matrix. Just from its name, it's very clear. The square matrix is a matrix having the same number of rows in the columns. Okay. And I told you in the beginning that in determinants, they are always square. As many rows will be there, so many columns will be there. But in case of matrices, there is no restriction. It may be a square matrix, it may not be a square matrix. It may be a rectangular matrix. Okay, in this case, we are discussing the square matrix, so rows and columns should be equal. Matrix C I have written in front of you 3, -4, 2, 5. This is square matrix. Another B is 1, 8, 4, 2, 5, 0, -3, 1, 2. As many are the rows, so many are the columns, so matrix is square. Very clear. Then is the identity matrix. An identity matrix denoted by I, capital I, is a square matrix for which the elements in the primary diagonal are equal to 1 and all other elements equal 0. Primary diagonal, it starts from the top left corner to the right bottom. ठीक है, ये primary आपका है column, primary diagonal है. In the primary diagonal, you should have elements only 1, and every element has 0. So 1 is known as unit. That's why we call it unit matrix or identity matrix. You may have a matrix of order 3. All the elements in the diagonal, this is the principal diagonal or primary diagonal. Here elements are 1, the rest every element is 0. Similarly, you can write an identity matrix of order 4. You can type yourself. Next is transpose of a matrix. The transpose of a matrix A denoted by A and at the superscript. इसको आप कहते हैं superscript, जिसको आप normally power पढ़ते हैं. Power is not the power. T कोई power नहीं है. We call it A superscript T. इसका मतलब होता है transpose of the matrix A. Is a matrix in which rows are changed into columns. I think I gave you example in case of determinants. पहली property आपने पढ़ी थी. If all the rows are changed into columns, then there is no change in the value of the determinant. पढ़ा था ना अभी first property. चीजों को पढ़ा करें तो थोड़ा सा try your best to sustain it in your mind. The same we are doing here. We are taking the transpose. We are interchanging every row into column. So I have given you an example. We have 2 rows. We are making it 2 columns. The first row was 3, 7, 4. I wrote it as the first column. Second row was -1, 2, 8.
I made it the second column. So this new matrix is known as A transpose. Then we go for, अच्छा इसके साथ ही एक और सुन लीजिए, एक होती है मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं, मेरे जहन से भी नाम निकल रहा, आ जाएगा आपके सामने। Singular matrix. देखिए, the definition I have given you here. A matrix is said to be singular if its determinant is zero. Remember, ये भी आप उसी definition में कहीं देखें. Matrix is singular. अगर हम matrix की notation हटा दें, we remove the brackets and we put all the elements in the vertical bars. The matrix will be changed into determinant, and you can evaluate the determinant. Matrix cannot be evaluated. So evaluate the determinant, and if the answer is coming to be zero, you will claim that this is a singular matrix, and inverse of every singular matrix can't be found. I mean, it's impossible. Okay, we are going for the matrix operations, scalar multiplication. A scalar is a real number. In scalar multiplication, each element in the matrix is multiplied by the scalar. I told you. और जब आप ये ऑपरेशन करते हैं determinants में, then I told you in some properties that either you multiply a row, any row or any column, but you do not multiply every element of the determinant. किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब पूरा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो गया. But in case of matrix, you have to have multiply each and every element by that scalar number. See the example here. If matrix A is this much, 4, 3, minus 2, 8, 0, 6, then 3 times A, you have to multiply every element of A with 3. 3 for the 12, 3 to the 9, 3 to the minus 6, 3 to the 24, 0, and 3 6 to 18. Got it? So this is the big difference between matrix and a determinant. Next operation, addition and subtraction I'm taking together. एक ही जैसा operation. But before doing, कभी देखिए आप once a patient has been brought in front of the doctor और डॉक्टर आंखें बंद करके ऑपरेशन नहीं शुरू कर देता, क्या करता है? पहले इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स चेक करता है. प्री रिक्विजिट में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसकी शुगर लेवल नॉर्मल है, उसको और कोई डिजीज तो नहीं है. तो ये सारी चीजें देखने के बाद ensuring that blood is available and everything is available. So after checking all the prerequisites, then he operates. यही काम हमने यहाँ करना है कि if two matrices are given to you, आपसे कहा जाए add, तो आंखें बंद करके हमने add नहीं शुरू कर देना. पहले हमने उसको क्या चेक करना है? That the dimension of the two matrices should be same. अगर एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की और दूसरी मैट्रिक्स है 3 by 3 की, तो can you add them? Impossible. A and B cannot be added if the orders or the dimension is different. क्योंकि फिर कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे ना, वो कहाँ ऐड होंगे? So, what is the prerequisite for the addition and subtraction? Both are same. That the order of the two matrices should be same. यानी dimension बराबर हो. Okay. See here. Two matrices may be added or subtracted if and only if they have the same dimension. अब देखिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ऐड हो सकती है, लेकिन अगर मैट्रिक्स B जो होती है वो सिर्फ 2 by 2 की होती है, आखिरी कॉलम ना होता, तो फिर आप A को B में ऐड नहीं कर सकते. So dimension must be same. And then what is the procedure? We add the corresponding elements. Corresponding elements से मेरी मुराद है that the element at 1 1 position must be added in the element of 1 1 position of the second matrix. Similarly, this is the element at 1 2 position, add it in 1 2 position element of the second matrix, and keep on adding every corresponding element.
Simplify this addition. I think student of class 2 can do very easily because इतना बड़ा आज़ाब नहीं है. There is no logic behind that, but there is a system, so you must follow that system. Then simplify, the answer is 4 to 1, 8, 16, 1. This is the answer of A plus B. How can you get A minus B? Just subtract. B के elements को subtract करना because B is now coming with minus sign. So A elements minus times B element. So 3 minus 1, minus 2, minus 4, 4. और जब minus के साथ फिर minus 3 करोगे, that will become plus 3. Okay. यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है. Make it 7 plus 6 क्योंकि 7 और ये plus हम कर रहे हैं तो plus 6. Answer should be 13. Okay. Make it 13. Write down. Similarly, A minus B, subtract the elements. You'll be getting these elements. अब मुझे ये बताइए, if I interchange the position of B with A को मैं इधर ले आऊं और B को इधर ले आऊं, I mean I am writing B plus A. So will you get the same answer or not? Yes, my question from all of you. कौन सो गई? सर सेम आंसर होगा. सर सेम आंसर. सेम आएगा. A plus B और B plus A सेम होगा. जैसे 3 plus 5, 5 plus 3 सेम होगा. Okay, if I interchange the position of A and B here, बताइए A minus B को B से A को replace करें, तो will the answer be same? A minus B as B minus A? No sir. जोर से बोलो. Be confident. No sir. No. Yes. Never. डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि वो माइनस है. 5 minus 3 का आंसर 2 होता है, लेकिन 3 minus 5 का आंसर -2 होता है. डिफरेंट है ना, सेम तो नहीं हुआ. यस सर. यस सर, डिफरेंट है. तो A minus B will not be equal to B minus A. ठीक है. Okay, there is a name of the property. If we interchange the position of the matrices, A plus B is equal to B plus A. इस प्रॉपर्टी का नाम किसी को याद है? Anybody? Yes or no? जल्दी से बता दिया करो. जी. No sir. नो. सुन लो, शाबाश, और याद कर लेना. मैंने पोजीशन चेंज कर दी ना दोनों मैट्रिसेस की. Then answer is coming to be same, equal. So we say the commutative property of matrices over addition is okay, is right, is valid. इसको कहते हैं, स्पेलिंग लिख लें, COMMUTATIVE, commutative property. Holds in matrices over addition. Over addition याद रखिएगा ऑपरेशन कौन सा है. अब दूसरे पैरा में लिखेंगे the commutative property of matrices over subtraction does not hold. नहीं ना, आंसर बराबर तो नहीं आ रहा ना. If answer is coming different, A minus B is not same as B minus A, so you say commutative property does not hold. Third, next operation is my multiplication. मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए उसकी प्री रिक्विजिट है. जैसे डॉक्टर ने चेक करना है कि हाँ भाई ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, कैन वी मल्टीप्लाई देम और वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम. जस्ट लुक अपरेंटली फर्स्ट. तो व्हाट इज द कंडीशन, किसी को याद है? दो मैट्रिक्स अगर आपको दी जाए, आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या तरीकाकार होगा? चेक करने का तरीकाकार क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुमने ये चेक किया था कि दोनों का ऑर्डर यानी डायमेंशन सेम होनी चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए? बच्चे आप सारे लोग इंटरमीडिएट पास करके आए हो या बस? सर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए. सर रॉ कॉलम चेक कर सकते हैं. जोर से बोलो. एक आदमी बोलो. पहली की रो और दूसरी कॉलम. पहली क्या पहली मैट्रिक्स का क्या देखना है? मैं पहली की रो और फिर दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम. गलत. ये आपका आंसर गलत है, इसीलिए पूछा है ना, ताकि आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं.
देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट टू मेक इम्प्रूवमेंट इन यू पीपल। एक बच्चे ने आपसे पहले एक जवाब दिया था, वो बच्चा कौन है? बोलो सर जोर से बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज विल इक्वल्स टू बिल्कुल, ये नंबर ऑफ आपका आंसर ठीक रोज है, इन बी। आपका आंसर ठीक है। The number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. Then the two matrices can be multiplied. This is called the prerequisite for the multiplication. देखते ही आप बता दें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। आप मल्टीप्लाई करने बैठ मत जाएं। डॉक्टर जैसे इंश्योर करते हैं हाँ भाई ये पेशेंट इस काबिल है कि इसका ऑपरेशन किया जाए, तो फिर ऑपरेशन करें। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल ही नहीं है तो हाउ आर यू डूइंग द ऑपरेशन? Now look here. I'm giving two example of two matrices. If A is 12, 0, 4, 0, minus 2 and 15 and B is 7, 12, 8, minus 1. देखिए डायमेंशन मुख्तलिफ है। Here dimension does not matter. अब आपने करना है find AB and BA if possible and show that AB is not equal to BA in general. In general ये बराबर नहीं होता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है AB और BA? अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी का नाम बताया था। जब आप किसी मैट्रिक्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, व्हाट सर प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। शाबाश, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आप देखिएगा अभी कि ए बी इन जनरल नेवर कम्स इक्वल टू बी ए, बराबर नहीं होता। सो वी क्लेम दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, सिर्फ ये एडिशन में तो होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में भी डज नॉट होल्ड एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन इज इट डज नॉट होल्ड। चलिए मैं प्रोसीजर अभी बाद में सिखाता हूँ। लगे हाथों में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दैट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द डिवीजन? हाउ कैन यू डिवाइड द टू मैट्रिसेस? अब मेरा सवाल सुनते ही आप लोगों की क्या कहते हैं बोलती बंद हो जाती, क्यों? बोले नहीं भी आता तब भी बताएं, तो मैं आपको बताऊं कि हाँ क्या ठीक है क्या हालत। Yes, आप sir. हाँ हाँ बोलो कैसे करते हैं Sir, डिवाइड दो? sir, divide. इतनी देर सोच रहे हो भाई, इंटरमीडिएट पास करके आए हुए हो जवानों। या वो भी ऑनलाइन ही पास किया था? ऑनलाइन पास करना तो बड़ा आसान होता है ना। किसी को नहीं मालूम, बस शर्म की बात है। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो उन्होंने अलजबरा पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। मैट्रिक्स पढ़ी है, कैसे करते हैं दो को डिवाइड? तो मुंह बंद हो गया आपको। वो कहेगा यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस। कुछ दिमाग खाली है आपका। तो सुन लो, तो सारी उम्र के लिए ये बात याद रखो और अपने आने वाले नस्लों को भी समझाना कि टू मैट्रिसेस कैन नेवर बी डिवाइडेड। कहानी खत्म हो गई एक छोटे से जुमले पे। क्या बताया? यू कैन नॉट डिवाइड टू मैट्रिसेस, कोई सी भी दो मैट्रिसेस। So there are basically four mathematical operations: addition, subtraction, multiplication and division. तो डिवीजन निकल गई आपके मैट्रिक्स के खाते में से। So only you are to go for addition, subtraction and multiplication. चलिए अब मल्टीप्लाई करें। So matrix A is having how many columns? 2 columns. Matrix B is how many rows? 2 rows. So matrix A can be multiplied with matrix B. And now see how do we multiply? हम मल्टीप्लाई करते वक्त यस बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर में जाएंगे आप। You will take the row of the first matrix and multiply with the column of the second matrix. Look here.
first element with the first element you will multiply, and the second element you will multiply with the second element of the column of the second matrix. So 12 into 7 plus which you have the plus डालना होगा और 0 into 8. The first row. Then first row, second column. 12 into 12 plus 0 into minus 14. Once all the columns are finished, leave your first row, take the second row and do the same procedure. 4 into 7 plus 0 into 8. 4 into 7 plus 0 into 8. Then 4 into 12 into then 0 into minus 14. And then take the third row, minus 2 into 7 plus 15 into 8. Then minus 2 into 12 and 15 into minus 14. I have explained each and every step by writing in detail. Now you go for the simplification. Multiplication of any number with 0 will be 0. 12 7 the 84 plus 0. 12 12 the 144 plus 0. 7 4 the 28 plus 0. And 48 plus 0. And minus 14 plus 120. Then minus 24 and this is minus 210. And then simplify further. 84, 144, 28, 48 and the last is 106, because 120 is with plus sign and 14 is with the minus sign. You subtract 14 from 120 to 106. And minus 24, minus 210, both are having a similar sign, so you just add them and attach the sign, negative sign. But this is the answer of the product AB. These were the matrix AB, we have multiplied AB, and this is the answer. Got it? AB was possible. Now we want to go for multiplication of BA. So write the B matrix at the first position and A matrix at the latter position. इसको इस तरह लिखा करें पहले. B को पहली position पे ले. Now see the columns of the first matrix. My first matrix is B. देख लो BA product we are going to find. My first matrix is B in this case. The columns of B are 2. And the rows of matrix A, they are 3. So because they are not equal, so BA product is not possible. Okay. As the columns of the first matrix B is not equal to the number of rows of the second matrix A, अब ये मेरी second matrix है. So the multiplication BA is not possible. Therefore, AB is not equal to BA in general. AB का आंसर है, BA का आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो how come they will be equal? So